What if I tell you that a semiconductor stock in India that has shown more than 36,000% return in 5 years and more than 20,000% return in 1 year, but behind the shine it is nothing more than a trap that can wipe out your savings overnight. Yes, my dear friend, today I'll discuss a dangerous stock that is given thousands of percent of return, but if you see the fundamental, it's a very weak fundamental. If you see the management, it's totally dangerous, but thousands and thousands percent return has been given, and a lot of innocent peoples, innocent investors are continuously in a trap. If you see the last few years, investor, the promoter, maximum promoter are selling within 1.5 years, and maximum retailer are continuously buying the stock. If you see immediately, the promoter holding is only 1.98% within 2 years. Only the thing is semiconductor. ये नाम सुन के लाखों इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया within 1.5 years. If you see the promoter holding status, you will surprise. September 2022, it was promoter holding was 74.50%, and within that time, that is presently June 2025, only 1.28%. But if you see the retailer in around September 2022, it was 25.50. Within that time, promoter retailer are 98%. That means it is a type of, typically it is a pump and dump process. मतलब क्या है? मतलब आर्टिफिशियली एक टाइप सप्लाई ऑन डिमांड जो है इनका कंट्रोल चेंज कर दिया. अल्टीमेटली फॉर दिस रीजन इनका जो अल्टीमेट जो डिमांड है इतना इंक्रीज कर दिया. फॉर दिस रीजन अल्टीमेटली इट मेक ए ह्यूज ट्रैप. सो वेलकम टू माय इन्वेस्टर मंत्र चैनल. आई एम शोमो. आज का दिन वेरी इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आए हैं. एक पिकुलियर स्टॉक के बारे में बोलने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द नेम ऑफ द स्टॉक. आफ्टर दैट then I will discuss about the fundamental, the weak fundamental, the sales, net profitability, and 9 important points that makes the company is like a trap. Okay, come to the point. First of all, what is the name of the company? Company name is RRP Semiconductor. The name is Semiconductor. That is the important point. The people, the investors are just going mad, just going crazy, and they are continuously investing their hard-earned money in that particular sector, particular stock, and I don't know what will happen their fate. Come to the point. The company name is RRP Semiconductor, and market cap is 7,400 crores. And if you see the PE, the first one, that is the price to earning ratio, is more than 1,000%. 1,114 is the PE. That is the dangerous. A normal PE is industry 30 to 35. Now come to the second important point, that is the PEG, price to earning growth. This is 2.87, that is more than dangerous. Now come to the third point, that is another thing, that is a promoter holding. Promoter holding is only 1.28%. No FII, no DII, that is no institutional buying, only the retailer are continuously buying, and more than 98% retailer are continuously purchasing. Last quarter also retailer are purchasing. So that is a more than dangerous situation. Come to the next point, that is the number 4, the book value. This is a very important point. You should have to mind why it is important. That is the only reason you should have to understand the fundamental. If you want to know the fundamental from basic, so you should have to be a member in my channel. All the members in that particular channel, especially the diamond member or the gold member, all are preferable and all are giving a type of videos from basic to A-level situation. So come to the important point. The book value is high level. That means 439 time of book value. That means that is the fifth point. Promoter decreasing within 3 years more than 72%. That is important. Come to the sixth point. If you see the sales growth in that particular company is unbelievable. No sales growth. That is zero sales growth. The sales growth is equal to 0. No sales. Now come to the point. That is the 7. Net profit. If you see the net profit, this is negative. Not only this year, not only this quarter, the net profit is continuously increasing. That means presently net profit is minus 0.29 crores,
Last year it was 1.59 crores negative also. Come to the important part, the eighth important point. The liability is continuously increasing. High level of liabilities are there. The promoter are continuously selling and taking different loans. If you see in the balance sheet, the dangerous type of liabilities are there. I'm just trying to give you the last year. It was liabilities of 0.42 crores. Presently, do you know what's the exact liability position? This is 38.86 crores. मतलब क्या है? 38 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने लाइबिलिटी लेकर बैठे हुए हैं. मतलब बैलेंस शीट में आप नजर डालें तो देखेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. उन्होंने ह्यूज लेवल का लाइबिलिटी इंक्रीज किया. 42 करोड़ मतलब 42 लाख जो था लास्ट ईयर में, अभी ये 38 करोड़ पे आ गया है. मतलब आप सोच सकते हैं कहां पर लाइबिलिटी है. दिस इज डेंजरस पॉइंट. दिस इज promoter are continuously selling their stock. Last year it was in September 2022 it was 74.50, and present this is June 2025 it is only 1%. 1.28% promoter are just holding a very smaller amount. Promoter are holding, no institutional, no FII, no DIA, only the retailer, only the public are continuously buying with the name of semiconductor. The theme was semiconductor. For this reason they are blindly continuously buying the stock. अंधे की तरह कंटिन्यूअसली इन लोगों ने बाई कर रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी, और टोटली इन ट्रैप में पड़ रहा है. इन लोगों का धोखा हो रहा है. मतलब एज फार एज माई नॉलेज आई थिंक दिस इज ए डेंजरस ट्रैप. नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द सिचुएशन प्रेजेंटली? व्हाट इज पंप एंड डंप प्रोसेस? This is a type of artificial situation created by some dishonest broker, dishonest some operator and few other peoples. जैसे कि इन लोगों ने पहले ये स्टॉक का दाम पहले था 100 रुपया, राइट? यहाँ पर था 15 रुपीज. 15 रुपीज का जो स्टॉक था अभी 5400 रुपीज में आ गए. अब सोच सकते हैं 15 रुपीज में जो स्टॉक मिल रहा था अभी वो स्टॉक चले आए पर 5455 पे. मतलब एक 6 महीने के अंदर 1000% रिटर्न दिया. 1 ईयर के अंदर 20,000% रिटर्न दिया, और 5 इयर्स के अंदर अनबिलीवेबल मोर देन 36,196% रिटर्न दिया. ये जो कम इसको कहते हैं पंप एंड डंप प्रोसेस. मतलब क्या है, इस तरह का जो कंपनी 100 रुपीज का है, कुछ ऐसे डिसऑनेस्ट जो ऑपरेटर है और कुछ ऐसे पीपल्स है जो सोशल मीडिया पे है और बाकी सब जगह पे है, इन लोग ये पर्टिकुलर कंपनी का डिटेल्स में एनालिसिस कर रहा है, इनका गुणगान कर रहा है, इनको जो कह रहा है कि ये कंपनी ह्यूज लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ये कंपनी सेमीकंडक्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यहाँ पर दो तरह का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया है. एक तो इन लोग जितना भी डिजायर्स पीपल है ये कॉन्टिन्यूअसली बाइंग स्टार्ट कर दिया, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, सोशल मीडिया जो है ये मीडिया पे एक हाइप क्रिएट कर दिया कि ये कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ऐसे करने से क्या होगा, ये सोशल मीडिया का जितना भी रिटेलर है, ऑनेस्ट जो पीपल्स है, जो इनोसेंट पीपल्स है, दोज आर ट्राइंग टू बाई. जब इन लोगों ने बाई किया, ये 100 कम्स, ये 1000 गोस टू अराउंड 1200 पे चले गए. 100, राइट? अब क्या किया, ये यहाँ पर सोशल मीडिया पे जितना भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, इन लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली इनका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया. छोटा जो सोशल मीडिया का है, इन लोगों का प्रॉफिट कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जितना भी इन्फ्लुएंसर है, इन लोगों का परसेंटेज कमीशन है. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर. जो डिसऑनेस्ट ऑपरेटर है, इन प्राइस को इतना इनको डिमांड इंक्रीज कर दिया कि प्राइस से साथ साथ ये 2500 चले गए. अब सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करने से जितना भी इनोसेंट पीपल है, उन्होंने देखा ये स्टॉक 100 पे था, अभी 1200, विद इन 5 मंथ से 3000 पे चले गए. अभी लेने का मौका है, अभी ये छूट जाए तो और दूसरी मौका नहीं मिलने वाला है. फॉर दिस रीजन द पीपल्स जंप एट दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड अल्टीमेटली ट्रैप. मतलब क्या है, अभी यहां से अब चले जाएंगे 4500 पे चले गए स्टॉक. ओके, अब इन द सिचुएशन क्या किया, इन लोग जो बाई किया था इसी समय इन लोगों ने सेल कर दिया, और जितना भी इन लोगों सेल कर दिया अल्टीमेटली ये लोअर सर्किट लगा. लोअर सर्किट मतलब ये मार्केट में सेल करने की सभी है, लेकिन कोई बाई करने के लिए रेडी नहीं है. अब ये कॉन्स्टेंटली 4500 से निकलते जाएंगे और डाउन होते जाएंगे, और अभी तक ये कंपनी ये जगह पर नहीं आया है. लास्ट 6 मंथ में 1000 रिटर्न दिया है. मतलब अब इसके बाद स्टार्ट होगा लोअर सर्किट. अब जब लोअर सर्किट होगा तब सेल करने की टाइम आपको नहीं मिलेगा. हर कोई ने सेल करने की कोशिश करे. एवरीवन ट्राइंग टू सेल दैट स्टेक.
but none was there to buy that stock. That means there is a lower circuit. For this reason, ultimately stock will hold and ultimately the price will constantly down. But आपका आप ट्रैप में हो जाओगे, 4,500 से डाउन होते होते 1,000 पे चले आएंगे. आप लिया है अराउंड 4,000 पे, 1,200 पे ले आए, चले आए 600 पे, 50% लॉस है आपका. आपने तब सोच रहे हैं कि अब ये इजी रहेगा, अब ये मौका है, तो फिर से आपने एंट्री कर लिए. उसके बाद 600 से लेकर 100 पे चले गए, तो सोच रहे हैं कहां पर ट्रैप हो गया. सो दिस इज द वे. डंप एंड डंप प्रोसेस से ये काम करते हैं. ये पंप कर दिया, इसके बाद डंप हो गए, ये इसके बाद ये क्या होगा, लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट होगा. जितना भी लोअर सर्किट होगा यहाँ पर सभी लोगों ने सेल करने की कोशिश करेंगे. देयर इज नॉन टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक. फॉर दिस रीजन यहाँ पर आप अटक जाएंगे. दिस इज कॉल्ड ट्रैप. अब इन दैट सिचुएशन हम लोग का क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव टू लर्न फंडामेंटल. यू शुड चेक एवरीथिंग. You should learn, you should check, you should think about the stock, why and how this particular stock are so much hyped, so much return are giving that particular stock. Then you should have to learn from that thing, right? आज के लिए खत्म. Before completing the video, last one thing I want to say you, don't buy blindly. Before buying, please consult yourself or your advisor